हेलो क्लास, नैना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैं आपके साथ एडवोकेट एम नीरव। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा इंटरनेशनल लॉ का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक, तो अब चलिए बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नेंस। फर्स्ट हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, द स्टेट इज ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है state on the basis of independence divided into two categories, sovereign and hegemony. According to Article 1 of Montevideo Convention 1933, the state as a person of international law should possess the following qualification: permanent population होनी चाहिए, defined territory and government, और capacity to enter into relation with other state। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न अ कम्युनिटी और यूनिट विद देयर कंसेंट। अकॉर्डिंग टू हारोल्ड डेमिरोव, वो कहते हैं गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पब्लिक पॉलिसी फॉर एन एंटायर सोसाइटी एंड द स्टीयरिंग मैकेनिज्म फॉर अ गिवन सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन टॉपिक रिकॉग्निशन की। व्हेन न्यू स्टेट एंड गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, they need recognition from other sovereign states which will facilitate or allow them to form diplomatic relation with each other. Next, the recognition of state is often a political act of a state. According to Professor L. Opinum, in recognizing a state as a member of international community, the existing states declared that, in their opinion, the new state fulfills the condition of statehood as required by international law. Next, according to Carlson, a community to be recognized as an international must fulfill the following conditions. There are four conditions. First, the community must be politically organized. Second, it should have control over a defined territory. Third, this definite control should tend towards permanence. And fourth, the community thus constitute must be independent. अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन की, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे रिकॉग्निशन फैसिलिटेट्स न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट टू पोजेस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द टेरिटरी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। सेकेंड, विद रिकॉग्नाइजिंग सन अ स्टेट गेट्स राइट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। फर्स्ट, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। सेकेंड, डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी। कंस्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कहती है? हीगल इज क्लेम्ड एज अ पियोनियर ऑफ दिस theory, and his Holland or Oppenheim support this theory. According to this theory, recognition is defined as a process whereby a state is constituted. Therefore, it is referred to as a constitutive theory. So, next, it helps state in acquiring international personality by becoming a member of family of nations. According to Holland, a state cannot be said to have attained maturity unless it is stamped with the seal of recognition, which is indispensable to the full enjoyment of rights which it connotes. नेक्स्ट बात करेंगे डिक्लेरेटरी थ्योरी एंड एविडेंसरी थ्योरी। Professor Hall, Warner, Pitt-Cobbett, and Briley were propounders of and supporters of this theory. This theory is based on the concept that recognition requires evidence or declaration. According to this theory, state or government exists as such prior to and independent of recognition. According to Professor Hall, the state, which is politically organized community, enters as of right into the family of states, must be treated according to the law as soon as it is able to show the marks of statehood, and no state has a right to withhold recognition when it was being earned. नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ रिकॉग्निशन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डॉक्ट्राइन: स्टाडर डॉक्ट्राइन, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन और हॉलस्टीन डॉक्ट्राइन। ये जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं, ये हमारे यूजीसी नेट के लॉ पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस बार के भी जो दिसंबर
2025 का यूजीसी नेट था, उसमें भी स्टार डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा था। तो फिर अब हम बात करते हैं इन तीन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ के डॉक्ट्राइंस के बारे में जो रिलेटेड हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिकॉग्निशन से। फर्स्ट बात करते हैं स्टार डॉक्ट्राइन। द स्टार डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिको इन 1930 इज अ प्रिंसिपल इन international law where states refrain from judging or formally recognizing new foreign governments, instead basing relations on de facto control, not legitimacy. Its name derived from Gennaro Estrada, Secretary of Foreign Affairs during the presidency of Pascal Cortez Rubio, 1932-32. ठीक, in simple words, Estrada doctrine is the recognition of a government should be based on its de facto existence rather than on its legitimacy. नेक्स्ट बात करेंगे स्टिम्सन डॉक्ट्राइन। द स्टिम्सन डॉक्ट्राइन वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1932 बाय हेनरी एल स्टिम्सन, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. It emerged as a response to Japan's illegal occupation of Manchuria and the creation of Manchukuo. The doctrine states that territorial acquisition obtained by force should not be recognized under international law. The doctrine introduced the principle of non-recognition of illegal acts in international relations. Next बात करेंगे हेलिस्टीन डॉक्ट्राइन के बारे में. The Hallstein Doctrine was adopted in 1955 by the Federal Republic of Germany, West Germany. It was named after Walter Hallstein, a senior West German diplomat. The doctrine was developed during the Cold War period. Its main objective was prevent international recognition of the German Democratic Republic, East Germany. According to the doctrine, West Germany would serve diplomatic relations with any state except the USSR that recognized East Germany. The doctrine was based on West Germany's claim to be the sole legitimate representative of the German nation. It functions as a foreign policy tool, not a rule of international law. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. आप सभी का माननीय लॉ क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू. बने रहिए हमारे साथ माननीय लॉ क्लासेस में.